Hello, welcome to News Moment English. First, India reported 46,164 new coronavirus cases in the last 24 hours, ending on Thursday at 8 am, taking the overall case load to 3.25 crore. Meanwhile, the death toll increased to 4.36 lakhs with the 607 fresh fatalities. The active cases have declined to 3.33 lakh. In what may be a post-Onam surge, Kerala on Wednesday reported 31,445 fresh corona cases, with the test positivity rate touching the 19% now. This is the first time that the state has reported more than 30,000 fresh cases since the May 20 this year. On Wednesday, 7 of the 14 districts reported upwards of 20,000 cases each, while Ernakulam reported the highest number of fish infections. Thrissur and Malappuram reported more than 3,000 cases each. Biofina. Drink healthy, stay healthy. Prevention is better than cure. Always cover your mouth and nose while sneezing. Wash your hands regularly. Use sanitizer. Avoid contact with others. Wear mask. Avoid social gathering. Don't touch your eyes and mouth frequently. Issued in public interest by Biofina. Drink healthy, stay healthy. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll-free number 1800-258-7060. The Durgapur Forest Department recovered 1,000 different species of parrots from bird smugglers. According to our reporter Vikash Prasad, the Durgapur Forest Department on Thursday morning recovered 1,000 different species of parrots from the Dubudrihi checkpost near Maithon. The news of the bird smuggling gang was already with the Forest Department. The team of CID, team of Wildlife Crime Control Board and the team of Forest Department of Durgapur jointly carried out the operation. They were recovered from a bus of Singh Travels in Asansol. 4 people, included the driver, have been arrested in the incident. He was represented in Durgapur Sub-Divisional Court today. The search for 2 of the main pandas of the cycle was being done by the Forest Department of Durgapur for a long time. Finally, they got succeed. The bullet body of a railway worker named Chandradev Paswan, alias Chandu, the 45 years old, was recovered on Wednesday night from the area adjacent to the Chinakuri railway siding under the Niyamatpur Fari of the Kuriti police station. He lived in the Radhanagar railway colony. However, the exact reason behind the death of the railway worker is yet to be ascertained. There is a suspicion of the enmity. Kulti police has started investigation into the whole matter. According to the information, the Chandu Paswan used to work in the power grid of the railway in the area adjacent to the Chinakuri railway siding. It is said that this incident happened the last few days back when the body started smelling. The attention of the people was diverted and the police got the news. According to police sources, someone informed on the phone about the dead body of a youth lying in the bushes near the power grid, on the basis of which the police reached there. They pulled out the body and sent it to the Asansol District Hospital for post-mortem on Thursday. सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th student. Get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434 822.
Asansol North Block Congress Committee Minority Department organized a rally under the leadership of MD Sakhir and submitted a memorandum to DM demanding the cleaning of Garui River. He was followed by Shah Alam Khan, Ashok Roy, Shashi Dubey, Jeenat Parveen, Rajiv Sinha, MD Firoz Khan, Kajol Dattya, MD Sartaj, MD Minhaj, Sanjay Ghosh, MD Azad, Somnath, Imran Rijvi, Bappa Majumdar and several workers of Congress. आज हम लोग आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जानिब से डीएम ऑफिस में डिपोजिशन दे रहे हैं और पिछला महीना भी आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी जी को हम लोग डिपोजिशन दिए थे। रेल पार से जो गुजरती है गरुई रिवर हाउसिंग से होता हुआ कुरैसी मोहल्ला, चनवारी, धतका और घाघरबुड़ी में जो मिला है, एक्चुअली 2-4 घंटा का जब बारिश होता है ऐसे मौके पे ये इलाका काफी डूब जाता है और नदी का साइड में रहने वाले जितने भी घर है रेल पार का हिस्सा 22 नंबर वार्ड से लेकर के 29 नंबर वार्ड, धतका, हाउसिंग और घाघरबुड़ी मंदिर तक वो इलाका पूरा डूब जाता है, जिससे आसपास के रहने वाले के घरों में पानी चला जाता है, जो कि काफी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। और आए दिन जो है जब पानी भर जाता है तो बहुत सारा बच्चा लोग जो है आसपास में रहता है, जिसके वजह कर बड़ा से बड़ा घटना वहाँ पे होता है। इसलिए प्रॉपर खास करके आसनसोल म्युनिसिपल बहुत सारे लोग इसमें ऐसे मुलविस हैं जो कि टीएमसी के काउंसिलर हैं, अवैध तरीके से जो है कारपोरेशन के ऊपर कहीं पर पार्टी ऑफिस बना हुआ है, कहीं पे बड़ा बड़ा हाउसिंग के पास देखिएगा फ्लैट बना हुआ है, कहीं पे मैरिज हॉल बना हुआ है। इस तरह से लेकर के जो है वो इलाका पानियों में भर जाता है और पूरे घरों में दुकानों में पानी चला जाता है, जो कि बड़ा हादसा होता है और जानी माली का नुकसान होता है। इसलिए हम लोग आज आसनसोल डीएम साहब के पास आए हैं डिपोजिशन देने के लिए। हम लोगों का यही डिमांड है कि रेल पार के लोगों को, आसनसोल के जनता को बाढ़ के पानी से बचाने के लिए जो है जल्द से जल्द इस नदी पे कार्रवाई हो, नदी की साफ सफाई हो, गहराई हो और नदी का जो डायमीटर है कहीं कहीं पे 106, कहीं पे 108 फुट, कहीं पे 102 का जो है फुट का डायमीटर है। लेकिन अफसोस कि नदी का जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है कहीं पे 40 फुट, कहीं पे 50 फुट। तो इस तरह का इस नदी के ये में बहुत सारा टीएमसी के लीडर, टीएमसी के काउंसिलर जो अवैध तरीका से जो है ना वहाँ पे ये किए हुए हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि फौरन इस पर कार्रवाई हो ताकि रेल पार और आसनसोल की जनता को पानी से बचाया जा सके। काजुल्ला का, शशि दुबे जी का और मेरे दोस्त इमरान रिजवी, अफजल, मिनाज, जैसे कि आज का प्रोग्राम आप सभी को पता है कि आज बहुत दिनों से ये जो आंदोलन चल रहा है गौरी नदी का, हम लोगों ने बहुत कोशिश कर जा रहा है कि कम से कम वो नदी साफ किया जाए। उसके अगल बगल जो है कचरा उठा के उसी के बगल में रख दिया जाता है, मगर साफ नहीं हो रहा, सिर्फ दिखावा हो जाता है कि साफ हो रहा है, मगर वो पानी से किस तरह घर में आदमी लोग परेशान होता है वो बरसात में अगर देखना है तो यहाँ का डीएम साहब को और जो मंत्री साहब है रेल पार में देख लीजिएगा कैसे वहाँ के इंसान लोग रहते हैं। बरसात के मौसम में घर में पानी डूब जाता है और घर पानी को छान छान के फेंकते हैं अपने घर से। इस अवस्था में वहाँ रेल पार में इंसान लोग सब रहते हैं, मगर इसके लेके आज एमएलए साहब को कान में जू तक नहीं हिल रहा है, कुछ सुनाई नहीं हो रही है। लग रहा है उनको कोई पता नहीं है, वो जानते हैं कि जाएंगे वोट मिल जाएगा, मगर वहाँ का इंसान को समझना होगा इस मुद्दा को कि आप जिसको वोट दे रहे, कम से कम जब आपके पास आए उनके टीएमसी के काउंसिलर हो या टीएमसी के एमएलए, उनसे एक ही चीज पूछिए कि मेरा रोड बना कि नहीं बना, मेरा नल में पानी आ रहा कि नहीं आ रहा, मेरे घर में पानी आ नहीं रहा, हम लोग कैसे रहेंगे। आप उष्टे मारे हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, वोट दीजिए, हमरा उन्नयन करबो, हम स्कूल कर देबो, हम ये करबो, मगर क्या हो रहा है देखिए, जीरो। आज जहां रेल पार है वही है, कुछ नहीं हुआ। विकास किसका हो गया? मंत्री जी का विकास बहुत जबरदस्त हो गया। विकास किसका हुआ? वहाँ जो काउंसिलर है उनका विकास हो गया, एकदम बहुत जबरदस्त विकास हो गया। देखिएगा वहाँ पर काउंसिलर के मैरिज हो रहे, कोई अपना फ्लैट बनवा रहे हैं, उनका विकास हो रहा। रेल पार के आवाम का विकास नहीं हो रहा। वहाँ जो लेडीज है उनको पानी के लिए तरसना पड़ रहा है, रोड अच्छा नहीं है, रोड के लिए सोचना पड़ रहा है। सोचिए कैसे है वो इंसान जो वोट लेने के समय जब आते हैं तो वोट मांग लेते हैं, और जब जरूरत इंसान को जरूरत है उस जरूरत को पूरा नहीं कर पा रही है। ऐसे ऐसे एमएलए हैं, ऐसे ऐसे वहाँ काउंसिलर है, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे नेता लोग को।
सिर्फ वोट लेने के लिए जाते हैं और काम के समय में जीरो हो जाते हैं। सिर्फ हाँ ये मेरे पास में एक सेल्फी ले लेते हैं, मंत्री जी जिंदाबाद, ई जिंदाबाद, ऊ जिंदाबाद, बस सेल्फी लेके मास्टर बना दे रहे हैं, उनको नेता बना दे रहे हैं। और अपने वार्ड के लिए कम से कम जो वहां का टीएमसी का नेता है रेल पार के, उनको तो सोचना चाहिए कि जब घर में पानी डूबता है, नाला का पानी डूबता है, कैसा उनको घर में महिला लोग पानी छानती है, एक बच्चा का जान चल जाता है, वो पानी का प्रॉब्लम है, नल में पानी नहीं आ रहा है और लोग कहां कहां पानी लेने जा रही है, रोड अच्छा नहीं है, वो सबको लेकर नहीं सोचा जाता है। और खाली आएंगे वहां पर मंत्री लोग या नेता लोग आएंगे, कांग्रेस वंदे मातरम, रेल पर The Chief Minister Mamata Banerjee announces some new projects for scheduled caste and scheduled tribes of peoples. The Chief Minister Mamata Banerjee showed her Mamata for the people of scheduled caste and the scheduled tribes. A meeting of the Jatiya Adivashi Council was held on Wednesday. At the end of the meeting, she was given a flurry of announcements one by one. She also announced an increase in budget for scheduled caste as well as the construction of Pakka houses and the increase the job security. The Chief Minister Mamata Banerjee from Nabarno said that the state government wants to bring more and more people under the public welfare scheme of the state government by increasing the budget of the scheduled caste department. Example like 1000 rupees will be given between 40,000 scheduled caste people as a pension. In 10 years, about 12 lakhs of people have been given land leases. Scheduled caste women will also get Rs 1000 per month in the Lakshmi Vandar project. 10.69 lakhs scheduled caste people have already been placed in government projects. The Chief Minister said that in the next 4 years, 20 lakh new houses will be built for the scheduled caste and the scheduled tribes alone in the entire state. She also announced the creation of 100 English medium schools for scheduled students in the next 3 years. News Movement present YouTube channel for news in Bangla, Urdu, English and Hindi. After the assembly election, the Sidelines IPS officers have been again given the responsibility of various posts. The instruction of appointment 11 IPS officers to various posts were issued on August 23rd itself. It includes senior officers like Dr. Rajesh Kumar, Ajay Kumar Nand, Shukesh Kumar Jain, Kunal Agarwal, Sunil Kumar Yadav, Suresh Kumar Chadeep. Most of these were kept in waiting. Now these officers have been given responsibility. But even this responsibility is not important or mainstream. Gurudwara Prabandhak Committee organized a mini rally on August 26, Thursday at 12 p.m. with all of the members in support of running Kisan Andolon. The dignitaries present were Manmohan Singh, the president of the committee, Surendra Singh, the ATU General Secretary of the committee, Jaswant Singh Sokhi, Narayan Singh, Malkit Singh, Gurvendra Singh Wadhwa and several others. Three police officers of DSP, ACP and SDPO level in the state police has been transferred. 3 separate instructions regarding transfer have been issued by the state police. The directions have been issued for transfer of 32 police officers in one order, 13 in one and 8 in one. In this, some changes have been also taken place in Asansol Durgapur Police Commissionerate. According to our reporter Daljit Singh from Raniganj, the Jasprit Kaur, the daughter of Sardar Amarjit Singh, the senior advisor to the Central Gurudwara Management Committee, is doing unprecedented work like serving the people with the spirit of service and connecting the children of Sikh society with Gurbani, and by embedding the teaching of Guru Sahib in life. It is playing an important role in making people's lives successful. The Jasprit told that on August 29th,
she got a chance in the international television quiz show in Charadi Kala television. The purpose of Jaspreet's life is to connect Sikh children with Gurbani and to spread the message of love, service, hard work and brotherhood to the people by removing the evil practices, superstitions, shabby stereotypes and hypocrisy prevailing in the Indian society. Sardar Daljit Singh Badwa, the General Secretary, West Bengal State National Journalists Association, has conveyed congratulations and best wishes to Jaspreet Kaur for participating in the International Television Quiz Competition and said that soon Jaspreet will also be honoured. The chairman of Central Gurudwara Management Committee Harjit Singh Bagga, Secretary Tarsem Singh, Manjit Singh, the founder of Sikh Welfare Society Sardar Surajit Singh Makka has congratulated Jaspreet Kaur. News Movement present YouTube channel for news in Bangla, Urdu, English and Hindi. The state BJP's minority leader Nazia Elahi Khan got arrested. She alleged took money from various people to fight the case by becoming an advocate. But she did not fight the case. Nazia was arrested by Girish Park police on Thursday. It is learned that Nazia claimed to be a lawyer but had no such evidence. BJP state President Dilip Ghosh and former Union Minister Debashree Chowdhury were also present when Nazia joined the BJP. However, the BJP has kept silence about the arrest of the time being. According to the police sources, a person named Sanjeev Agarwal alleged the Nazia had taken Rs 6 lakhs from him to fight the divorce case. But the matter was not fought. After this, the person lodged a complaint with Girish Park police station. The police has sent a letter to the Bar Council and the Bar Association for investigation. From there, the police confirmed the absence of Nazia's advocate. It is worth noting that in January 2018, Nazia has taken the BJP flag from Dilip's hand. Nazia joined the saffron camp soon after Israt Jahan, one of the complainants in the triple talaq cases, joined the BJP. The party's state spokesperson Shamik Bhattacharya said, "Many people have joined the BJP. I don't know everyone." However, Nazia has been portrayed several times in various media as the leader of the law and labor cells of the BJP. Photos of the closeness of many leaders have also been seen with her. The Supreme Court advocate and the minority leader is written on her FB profile. She was also very active on social media. At the same time, she used to make very frank comments about the Now, let's have a look on railway updates. For more accommodation and convenience of passengers, one additional AC3 tier coach and one additional sleeper class coach will be attached with 01447 and 01448 Jabalpur-Howrah-Jabalpur special train. This train leaves Jabalpur on 26th August and leave Howrah on 28th August on permanent basis. Today's SMS of the moment. I kept 6 honest serving men. They taught me all I knew. Their names are what and why, and when and how, and where and who. ভিডিওটি যদি আপনাদের পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করবেন যাতে আমাদের যদি নতুন কোনো ভিডিও আপলোড হয় তাহলে সবার আগে আপনাদের কাছে সেই বিষয়ে নোটিফিকেশন চলে যায়। সাথে সাথে ভিডিওটি অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।